Assalamualaikum dear friends, how are you? Hope you are fine. And today we are starting with new video about dynamic verbs. What are the dynamic verbs? Most verbs are in this group. Dynamic verbs usually involve an action or an active process. डायनेमिक वर्ब क्या होते हैं? डायनेमिक वर्ब वो होते हैं जो एक्शन को ज़ाहिर करें, यानी आप कोई भी काम चलते फिरते कर रहे हों उसे बताएं। और वो डायनेमिक वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो कि फ़िलहाल हो रहे हों, यानी कंटिन्यूस में हो रहे हों। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये फ़िज़िकल एक्शंस होते हैं और इन्हें हम कंटिन्यूस टेंसेस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, now I will tell you some examples. For example, to play, to eat and to speak. Like this, I will tell you more examples about dynamic verbs. We can use dynamic verbs to form the continuous tenses, as I told you before. जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हम dynamic verbs को mostly continuous tenses में use करते हैं. I am playing with my friends. She was eating lunch with him. She will be speaking with him later. So in these sentences you can see ing showing dynamic verbs. Okay, these are the dynamic verbs with showing some actions in present now. Okay, so now we will check the difference between stative verb and dynamic verbs. Action verbs. Dynamic verbs are action verbs, as I told you. And then states or conditions. States or conditions are stative verbs. Actions we take, things we do or things that happen. Dynamic verbs कौन से होते हैं? जो किसी भी एक्शन को जाहिर करें, काम को, और जिसमें हम लेते हैं, देते हैं और करते हैं, ठीक है, और जो कुछ होता है. Then next is states or conditions. Stative verbs. Stative verbs refers to states. हालत को बताते हैं. The way things are, कि चीज़ें कैसी हालत में हैं. Their appearance, उनकी मौजूदगी. State of being, उनका होना. And senses. Senses के बारे में भी बताते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया इसके बारे में. So today we are also describing the difference between stative verbs and dynamic verbs. Now I will tell you more about stative and dynamic verbs. Yes, you can see here there are some examples about dynamic verbs. Run, work, learn, play, eat, drink. यानी वही बात जिसमें आप कोई काम चलते फिरते कर रहे हैं. Run, भागना, work, काम करना, learn, याद करना, play, eat, drink. These are the dynamic verbs. Okay, और डायनेमिक वर्ब्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? डायनेमिक वर्ब्स को हम सिंपल टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और परफेक्ट टेंसेस में. इट मीन्स हम इसे ऑल टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. ओके, देयर आर 12 टेंसेस लाइक प्रेजेंट indefinite, present continuous, present perfect continuous. We can use in all tenses like past indefinite, past continuous, past perfect tense, past perfect continuous, and like this future indefinite, future continuous, and future perfect continuous, and future perfect. Okay, is it clear now? Simple tenses means example, she walks, she walked, and she will walk. These are the simple. This is first one is for present, then for past indefinite simple, and then future indefinite. And like this I will show you some examples about continuous tenses, how we can use. She is walking, she was walking, she will be walking. Perfect tenses. She has walked, she had walked, she has been walking. Okay, so these are the perfect tenses examples. So we can use in all tenses dynamic verbs. Okay, like this I will tell you about now stative verb.
Stative verbs we can use only in simple tenses and perfect tenses, and you know the examples of stative verbs yesterday you had done. Like we can use in emotions, and we can use in situations, we can use in senses. Okay, कैन बी यूज विद सिंपल टेंसेज एंड परफेक्ट टेंसेज. अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये सिर्फ सिंपल टेंसेज में यूज़ होते हैं या सिर्फ परफेक्ट टेंस में. सिंपल टेंसेज में कैसे, आई नो, आई नीड, और इसे हम कंटिन्यूस टेंसेज में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते. जैसे हम डायनेमिक टेंसेज को कंटिन्यूस टेंसेज में यूज़ कर सकते हैं, डायनेमिक वर्ब्स को, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स को हम कंटिन्यूस टेंसेज में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते. ओके, ये हो गया. ये फ़र्क, इसका मेन डिफरेंस ये है. परफेक्ट टेंसेज, आई हैव अ पैट, आई ओन अ कार. परफेक्ट टेंसेज में हम कैसे यूज़ करेंगे, आई हैव अ पैट, आई ओन अ कार, यानी मेरे पास एक पालतू जानवर है, और जो आई ओन अ कार, मैं कार का मालिक हूँ. ओके, सो दीज आर द स्टेटिव वर्ब्स एंड दीज आर dynamic verbs. Dynamic verbs, simple difference is that dynamic verbs we can use in all tenses, and stative verbs we can use only in simple and perfect, but not in continuous tenses. Okay, remember this thing, this is the main difference. And one more thing, in dynamic tenses we can, in dynamic verbs we can use action verbs like run, walking, running, run, play, sitting, eating, these. And in stative verbs what we can use about emotions, about which type of verbs, like senses, these all we can use in stative verbs. Okay, now if you want to ask more something about stative verbs and dynamic verbs, you can drop your message in comment box. Okay, don't forget to subscribe my channel and like the video and press the bell icon. Thank you, goodbye, Allah Hafiz.